Today we are going to study about the rectangle, a special type of quadrilateral. So first of all, look at the definition of the rectangle. A quadrilateral is said to be a rectangle if both pairs of opposite sides are equal and all angles are 90 degrees. So just look at this figure. In this figure you can find that it is a quadrilateral. This quadrilateral is drawn such that its opposite side, both pair of opposite sides are equal. Means AB is equal to BC. Means one pair of opposite sides are equal here. And the second pair of opposite sides are also equal. AD is equal to BC. But all the four sides are not equal here. In the first pair of opposite sides are equal and the second pair of opposite sides are equal. And every angle is 90 degree. Every angle is 90 degree. So it is said to be a rectangle. So why in rectangle ABCD we write opposite sides are equal. That means AB is equal to DC, AD is equal to BC, and every angle is 90 degree. That means all angles are equal here. Angle A is equal to B is equal to C is equal to D is equal to 90 degree. यानी यहाँ चारों एंगल्स आपस में इक्वल है, लेकिन चारों साइड्स आपस में इक्वल नहीं है. So this is the first definition of the rectangle on the basis of the quadrilateral. Now we are going to define the rectangle in sense of a parallelogram. Now look at the another definition of the rectangle in the sense of parallelogram. Suppose that I have drawn a rough figure of a parallelogram. It is a parallelogram, it is not a rectangle. But when this parallelogram is said to be a rectangle, you can find that any one angle, no angle is here is equal to 90 degree. यहाँ पर कोई भी एंगल 90 के बराबर नजर नहीं आ रहा है. तो अगर हम इसके किसी एक एंगल को 90 डिग्री में कन्वर्ट कर दे तो चारों एंगल ऑटोमेटिकली, बाकी के तीन एंगल ऑटोमेटिकली 90 में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो अगर इस साइड को हम स्लाइटली सीधा करें इसी पॉइंट के अबाउट, मीन्स ऐसे सेट करें, इसे खींचते हुए हम 90 डिग्री के एंगल पर अगर सेट कर दे, सपोज दैट इसे खींचकर हम ऐसे ले जा रहे हैं, साइड को हमने खींचा तो ये जो एंगल पहले ऐसा था, इतना मेजर था इसका, अब उसका मेजर बढ़कर इतना हो जाएगा. दैट मीन्स अगर हम इस एंगल को 90 डिग्री के रूप में कन्वर्ट करें तो साइड को हमें थोड़ा इधर स्लाइड करना पड़ेगा, और जैसे ही ये साइड इधर स्लाइड होगा 90 डिग्री के एंगल पर तो बाकी के सभी वर्टेक्स अपने आप 90 पर अरेंज हो जाएंगे. तो इस कारण रेक्टेंगल को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं. ए पैरेललोग्राम इज सेड टू बी ए रेक्टेंगल इफ इट्स वन एंगल इज 90 डिग्री. सो इन द बोथ सेंस यू कैन डिफाइन ए रेक्टेंगल. Now some point to be noted. When you look at the rectangle, you can find that the opposite sides are equal in this rectangle and every angle is equal to 90 degree and all angles are equal to each other. So, can you say that it is a parallelogram? Just look at the figure. When the pair of opposite sides are equal, when the pair of opposite sides are equal and every angle is, all angles are equal here, then automatically the opposite sides become parallel to each other. जब ये दोनों साइड इक्वल हैं और चारों एंगल आपस में सेम है तो ऑटोमेटिकली ये दोनों साइड भी पैरेलल हो जाएंगे और AD तथा BC भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे.
पैरेलल लाइंस के सभी प्रॉपर्टीज यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। अगर हम एंगल ए और बी को जोड़े तो 180 डिग्री आएगा। दैट मीन्स एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है। कोई भी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स अगर हम ले तो वो सप्लीमेंट्री है। मीन्स ए प्लस बी 180, ए प्लस डी 180, बी प्लस सी 180 डिग्री एंड सी प्लस बी 180 डिग्री। तो इट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी फॉर द पैरेलल लाइंस। And also you can find that the opposite angles are equal here. So parallelogram में हमने पढ़ा था अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो parallelogram का एक प्रॉपर्टी तो यहाँ फॉलो हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ा, इसके पहले पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी की अपोजिट साइड्स यहाँ बराबर हैं और साथ ही साथ पैरेलल भी हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइड के आधार पर अगर हम देखें तो ये पैरेललोग्राम्स के सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट एवरी रेक्टेंगल इज ऑलवेज ए पैरेललोग्राम। एवरी रेक्टेंगल इज ऑलवेज ए पैरेललोग्राम। बट इसका उल्टा जब बोलेंगे एवरी पैरेललोग्राम इज ऑलवेज ए रेक्टेंगल, नो, एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट ऑलवेज ए रेक्टेंगल। सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते हैं। वो कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तभी कहलाएगा जब उसका एक एंगल 90 डिग्री गिवन हो, जैसा कि सभी पैरेललोग्राम में नहीं होता। तो अगर किसी पैरेललोग्राम के एक एंगल को हम 90 बनाएंगे तो वो हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके एंगल को मेजर करके हम बता सकते हैं कि वो 90 डिग्री है या नहीं। और ऐसे भी 90 डिग्री तो देखने से पता चल ही जाता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक वर्टिकल लाइन स्टैंड करता है। तो 90 डिग्री का एंगल देखने से भी हम अंदाज से बता सकते हैं। तो वी कैन कंक्लूड दैट एवरी रेक्टेंगल इज ऑलवेज ए पैरेललोग्राम बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट ऑलवेज ए rectangle. So this is the conclusion and it is the comparison between a rectangle and a parallelogram. Now we are going to study about the properties of rectangle in the another video.